And today I'll be telling you why you should buy this M1 MacBook Air in 2023. We have a tendency, हर कोई यही सोचता है कि भाई जैसे ही अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई, स्पेशली कोई लैपटॉप या कोई फ़ोन पुराना हो गया, तो मतलब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई एंड वो फ़ोन ही बेकार हो चुका है या वो लैपटॉप ही बेकार हो चुका है. बट दैट्स नॉट द केस विद द मैकबुक, स्पेशली विद द M1 MacBook Air. I'll tell you one thing. M1 MacBook Air is the most value for money MacBook right now. And देखो मैंने ये MacBook खरीदा था for 84,000 रुपीज़ और आज भी ये MacBook 84,000 रुपीज़ का ही है. एंड आज भी ये MacBook 84,000 रुपीज़ का ही है. मैंने भी क्रोमा से खरीदा था और आज भी ये क्रोमा में ही मिल रहा है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइस हिस्ट्री अबाउट दिस MacBook. जब M2 लॉन्च हुआ था, एप्पल ने इस MacBook का प्राइस 10,000 रुपये बढ़ा दिया था. तो ये 84,000 से लाइक 92, 93, 94,000 हो गया था. 10,000 रुपये आपने बढ़ा दिया था. सो आई वुड जस्ट से तुमने आज तक कभी टेक में ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है. इस लैपटॉप के साथ हुआ था. M1 MacBook Air was a लैपटॉप जिसकी वैल्यू बढ़ी थी. And now that the prices have again come back to its original price, which is 84,000, I would just say it's still a great buy. You can always use credit cards and debit cards to reduce the price even further. And GST return to high, you can always do that and even reduce the cost even more. M1 MacBook Air आया कब था at first case? It was launched in November of 2020. कितना टाइम हो चुका है? 21, 22, 2 साल हो चुके हैं. अभी 23 का like जनवरी चल रहा है. So it's been almost like 2 years, 2-3 months. Okay. M1 है क्या? M1 is basically just an Apple का खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर. Intel to M1 was a huge jump, but M1 to M2 to M3 is a very incremental one जो हमेशा से रहता रहा है. It's like an iPhone 4 और फिर iPhone 4S आया. तो it's like an S. So the M2 जो MacBook Air है, जो पतला सा है, जो नया डिजाइन के साथ आया है, that is basically an S version of the MacBooks. Listen, I'm telling you one thing. कोई चीज़ अगर पुरानी है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चीज़ ही बेकार होगी. This laptop has basically got the fundamentals right. देखो लैपटॉप्स के अंदर हमेशा ये नहीं होता कि भाई प्रोसेसर ही सब कुछ होता है. That's not the case. This laptop has got the fundamentals right. Like what do I mean by fundamentals? Let me tell you one thing. Like for example, अब ये है वो लैपटॉप, ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ. This laptop is so darn good. First of all, like the build quality of this laptop is amazing. It's fabulous. मतलब आज भी मैं MacBook खरीदने जाऊँ, उसका भी build quality will be same as this. मैं अगर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का भी MacBook खरीदने जाऊँ, उसका build quality will be very similar to this 70,000 वाला MacBook. For the past like पिछले 1 साल से इस MacBook को यूज कर रहा हूँ. मेरे को इसकी build quality बहुत ज्यादा अच्छी लगी. Like I love the build quality of this MacBook. Like it is so thin. It is like आज तक इसका ट्रैक पैड एक बार भी फेल नहीं हुआ है. मतलब हमेशा इट हैज वर्क. लाइक मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ, इट रजिस्टर्स द क्लिक्स. इट्स लाइक सो डैम थिन. लाइक यू नो, सो दैट्स द थिंग. लाइक फंडामेंटली दिस लैपटॉप इज रियली गुड. आज तक इसका हिंज, ये लैपटॉप को इज बीन 1 year, ओके, एंड 1 year से मैं हैवीली इस लैपटॉप को यूज कर. आज भी ये लैपटॉप एक फिंगर से खुल जाता है. आई डू इट वन मोर टाइम. दैट्स इट. बस एक फिंगर से खुल गया. अब सी, दिस इज नॉट अ खरीदने वाला क्राइटेरिया फॉर अ लैपटॉप, बट आई एम जस्ट सेइंग इसका जो हिंज मैकेनिज्म्स है, दे आर सो डैम गुड, राइट? मतलब एक लैपटॉप को हिंज को बनाने में कितना मेहनत लगता है. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनका लैपटॉप का हिंज हैज ब्रोकन, लाइक द लैपटॉप हैज फॉलन अपार्ट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप्स अगर उनकी बिल्ड क्वालिटी अगर दिखती भी है तो ये दीज हिंजेस दे स्टॉप वर्किंग. लाइक स्क्रीन पील ऑफ होने लग जाएगी या यू नो इट स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ वेरी वियर्ड वे. केसेस लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड्स लगाते हैं. मैंने आज तक इस मैकबुक में एक भी स्क्रीन गार्ड, एक भी कवर कुछ भी नहीं लगाया. It's a bare naked MacBook. ठीक है, there's no screen guard attached to this. Like there's no keyboard cover attached to it. Like since day one मैंने अभी भी एक बार भी इसमें कुछ नहीं कर रखा है. And for the past 1 year I'm using it and it's perfectly fine. Like बहुत अच्छे से काम कर रहा है. I want to throw some light on the I/O. So people will say यार इसमें तो खाली 2 ही Type C ports हैं. तो क्या ये 2 Type C ports are enough? Let me tell you one thing. I wish इसमें 3 होते हैं. या I wish इसका चार्जिंग पोर्ट अलग होता. Because the moment I plug this laptop into charge, I'm just down to 1 Type C port. तो मेरे पास खाली एक ही Type C port रहता है. Like, tell me one thing. How often do you need to use both of the Type C ports? And even if you want to use a Type C port, भाई तुम इस MacBook को चार्ज कर दो ना, थोड़ा सा चार्ज करके फिर दोनों Type C ports यूज कर लेना. इसका MacBook का बैटरी लाइफ इज amazing. Personally, in my use case, I'm a college student. I'm in my like 2nd year of my college. मेरे को आज तक कभी भी ऐसी कोई नीड नहीं आई कि भाई I need to like plug in like so many hard drives at the same time. Okay, so that's the thing with my case. So another thing which I liked about this MacBook was its screen. What do I mean by its screen? देखो इसका स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लाइक रियली ब्राइट. ठीक है, अगर तुम 70-80,000 का कोई विंडोज लैपटॉप भी लेते हो ना, उसमें तुम्हें इस हाई रेजोल्यूशन का स्क्रीन नहीं मिलेगा. What do I mean by high resolution screen is like the easiest way to find if a screen is good or not is just look into the screen and look for texts. Like तुम टेक्स्ट ढूंढने की कोशिश करो. देखो मैं लिटरली इतना जूम इन कर चुका हूँ इसमें, अभी भी मेरे को टेक्स्ट के पिक्सल्स नहीं दिख रहे. ये सेम 4 लिखा हुआ है तो अभी सेम 4 में मेरे को पिक्सल्स नहीं दिख रहे हैं. सो दैट्स द थिंग. इफ यू वांट टू चेक हाउ शार्प द स्क्रीन इज, जस्ट लुक एट द टेक्स्ट. इसमें आज से इसका इतना कलर, इतना शार्प डिस्प्ले है. and it's like more than 2K. Like ये 1440p से भी ज़्यादा है. It's like almost a 2.5K display. ठीक है, like it's not a 4K panel, but it's not even a 2K panel. Like ये 2K and 4K के बीच में है. And the fact that ये खाली 13 inches का display है,
which it makes it even more sharper. So like it's a smaller screen, like so the pixel density is higher. So that's the thing. तो मेरे को इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा. इसका डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल इज रियली डैम कलर एक्यूरेट. इट्स एक्सट्रीमली ब्राइट. मैं आउटडोर जैसे यूज किया हूँ एंड ट्रस्ट मी 70-80 हज़ार का विंडोज का लैपटॉप इतना ब्राइटनेस नहीं जाता जितना ये जा रहा है. ठीक है, 400 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस. इट साउंड्स लेस as compared to phones. हमारे phones like 700-800 nits तक जाते हैं, but like the 14 Pro now goes to up to 1000 nits. But the thing is, 400 nits is enough. I'm telling you, it's enough. It's enough, and it's a lot than the Windows counterparts which you find. Another thing which I liked about this is the performance. What do you mean by performance? See, I'll just tell you one thing. If your work requires performance in like short bursts, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो जो बस थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा performance require करता है, तो उसमें M1 will crush it. I'm telling you, it will crush it. The main thing about this MacBook is that it doesn't have any cooling. ठीक है, इस MacBook के अंदर कोई फैन नहीं है. It is completely fanless. मतलब इसके अंदर आज तक एक भी वाइब्रेशन नहीं आया है. इसमें आज तक कोई आवाज नहीं आई है. I swear to God, मैंने आज तक like इस MacBook में एक बार भी आवाज नहीं. There's nothing because there are no moving parts. इसमें ना हार्ड ड्राइव है. There's a flash-based storage in it. There's a SSD inside. SSD के अंदर कोई moving parts नहीं होते. इसमें ना फैन है. There's no cooling fan inside. It's completely passively cooled. It's passively cooled in the sense the CPU is there. CPU के ऊपर एक copper heat sink है और वो copper heat sink उस हीट को डिसिपेट कर देता है. सो इट्स कंप्लीटली पैसिवली कूल्ड. इसके अंदर पैसिव कूलिंग है. तो मैकेनिकली इसके अंदर देयर इज नथिंग कैन गो रॉन्ग. इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन एंटायर कंप्यूटर हैज गॉन रॉन्ग. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर तुम परफॉर्मेंस चाहिए देन M1 इज रियली ग्रेट. बट अगर तुम लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंसिव ड्यूरेशन लाइक आधा एक घंटे तक तुम इस MacBook के CPU को like 100% यूसेज पे यूज कर रहे हो, then obviously the performance will slow down, and that's common with every single CPU. That in the terms of tech we call it as like throttle. So it throttles the performance, like limit कर देता है CPU performance. क्योंकि आधा घंटे तक 1 घंटे तक full 100% में रहेगा तो भाई इसमें आग लग जाएगी. So deliberately वो अपना performance कम कर देता है after a certain point. That is common. ये हर कोई करता है, ये हर Windows करता है, ये हर MacBook करता है, ये हर चीज़ करता है. So it's completely fine. So मेरे को इसका performance बहुत सही लगा. इस चैनल पे जितने भी वीडियोस है, all the videos are edited by this MacBook, and this MacBook is a base MacBook. ठीक है, this MacBook is not like ultra या मैंने कोई customize नहीं कर रखा है. It has 8 GB of unified memory. It has 256 GB of flash-based storage in it. So fundamentally, I would just say like these are the main things why I like this MacBook. First of all, it's its screen. Second is its I/O. Then third is its like build quality, and the fourth is like it's an overall package, right? Like the performance is really good. Like मैं इसमें 4K videos edit कर सकता हूँ. And I would just say one thing: if you're into editing videos, I would just say just stick with Final Cut Pro with this MacBook, because तुम Premiere Pro या DaVinci Resolve यूज करोगे उसके अंदर there might be slowdowns, you know, because Final Cut Pro is made by Apple and Final Cut Pro is optimized and it is made to work with Apple Silicon really well. So मैं बस बोलूँगा Final Cut Pro use करो, and if you're using Final Cut Pro then buy the M1 even in 2023. I would say it's a phenomenal editing machine. I'm just telling you. But that's all I've got to say about the MacBook Air in 2023. It's a great laptop, to be honest. And it's a phenomenal laptop. That's what I would say. And if you like this video, please like this video and subscribe to this channel as well. And thank you for watching the video. Until next time, goodbye.